Hello learners, welcome to Smart Class. In today's class, we're going to discuss another chapter that is Animals, Birds and Doctor Dolittle, and this is from class 7th Poorvi. So this class is going to be very important for the students of class 7. So let us see what is there in this story. Previously, we have discussed the other chapters like Try Again the Day the River Spoke and also 3 days to see. If you have not watched those videos, you can watch the videos that is in the you can click on the I button above and also in the description box below. So let us start our new chapter, that is Dr. Dolittle. Animals, Birds and Dr. Dolittle. But let me tell you one thing, that in the description box you'll also find one link where you'll get the question answers of this chapter. तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स बेसिकली मिल जाएगा description box में. You can click on the link and get the answers. So let us discuss the story. The story is about one doctor and the name of the doctor is Dr. Dolittle. So the story begins with Dr. Dolittle and he is talking to Cat's Foodman. ये कैरेक्टर है. Cat's Foodman के साथ बात करता है डॉक्टर डूलिटिल. अब इस स्टोरी में होता क्या है ना, डॉक्टर डूलिटिल एक ऐसा डॉक्टर है जो कि समझता है एनिमल लैंग्वेज को. So one day, the cat's foodman, he suggests that this Doctor Dolittle should stop treating humans and become an animal doctor. तो उनको एनिमल डॉक्टर बनना चाहिए. Why? Because he understands animal much better than the local the vets, जिसको बोलते हैं हम vets or the veterinarians. राइट तो उस डॉक्टर से ये बहुत अच्छे से समझ पाता है एनिमल लैंग्वेज को. एंड दैट्स व्हाई द कैट्स फूडमैन सजेस्ट कि आपको तो बन जाना चाहिए एक एनिमल डॉक्टर. और साथ साथ और एक कैरेक्टर हमें मिल जाता है स्टोरी में, दैट इज पॉलिनेशिया. तो पॉलिनेशिया कौन है? पॉलिनेशिया इज द डॉक्टर्स पैरट जो सपोर्ट करता है इस बात को. So Polynesia is Doctor's parrot and she supports this idea and reveals an amazing secret. What is the secret? That animals have their own language and can communicate with one another. तो ये एक सीक्रेट है जो पता चल जाता है डॉक्टर डूलिटिल को. So she teaches the parrot Polynesia teaches Dr. Dolittle the bird's language and explains, और धीरे धीरे explain करती है that animals communicate not only through words or not only through sounds but also through the body movements. जैसा हमारा कुछ है verbal communication होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है. Similarly, the animals or the birds, they have also their non-verbal communications. Understand? So the Dr. Dolittle, he becomes very fascinated by this discovery and then doctor eagerly learns. डॉक्टर ये धीरे धीरे सीख जाता है. क्या सीखता है वो? एनिमल लैंग्वेजेस एंड ग्रेजुअली ही बिकम्स एन एनिमल डॉक्टर. और कुछ दिनों के बाद वो क्या करता है ना, people are not the people but animals from different places, they come to Dr. Dolittle for treatment. तो मोर एनिमल्स अराइव. तो डॉक्टर डूलिटिल धीरे धीरे फेमस हो जाता है बिकॉज एक घटना ऐसा है कि प्लाव हॉर्स जो है, हॉर्स एक आता है इसके पास, डॉक्टर डूलिटिल के पास, और ये हॉर्स बताता है दैट ही इज गोइंग ब्लाइंड एंड ही ओनली नीड्स स्पेक्टेकल्स. ओके, तो बाकी डॉक्टर को ये बताना जरूरी था. जैसे बाकी डॉक्टर ये समझ नहीं पाया था कि एक्चुअली हॉर्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है, बट एनिमल डॉक्टर जो अभी बना है डॉक्टर डोलिटिल, वो इजीली समझ पा जाता है और इजीली समझ जाता है कि हॉर्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है और कौन सा दवाई देना चाहिए. सो दैट्स व्हाई ही बिकम्स वेरी पॉपुलर इन अ फ्यू डेज. डॉक्टर डोलिटिल बहुत फेमस हो जाता है एंड हिज गार्डन ऑलवेज क्राउडेड विद एनिमल्स सीकिंग हेल्प. पूरा गार्डन एकदम भर जाता है किससे? एनिमल से. जो एकदम जैसे हम क्लिनिक में जाते हैं और ह्यूमन बीइंग का लाइन लग जाता है, so similarly animals also come in a line, join in a line for the treatment and separate doors बनाया जाता है for horses, for cows, for sheep and for mice also. Understand? और बाकी जो birds है जिसको हम बोलते हैं migratory birds, so the birds also travel to the foreign lands. और उसका जो फेम है, डॉक्टर डोलिटिल का जो फेम है, वो बहुत दूर तक चला जाता है एंड ही बिकम्स नोन एज द डॉक्टर हु कैन अंडरस्टैंड एंड केयर फॉर एनिमल्स. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर इन द स्टोरी, अब धीरे धीरे हम स्टोरी को एनालाइज करेंगे और एक एक थीम को समझ लेंगे. और जो भी स्टोरी हम पढ़ेंगे उसके लिए थीम्स बहुत जरूरी हो जाता है बिकॉज व्हाइल यू राइट द आंसर यू हैव टू राइट द थीम्स.
for the maximum score. Okay, so first thing what you understand here is the theme of love and compassion for animals. तो ये अगर देखा जाए कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक क्वालिटी कंपैशन ये है, और ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं होना चाहिए, साथ साथ एनिमल्स के लिए भी होना चाहिए. So this story will teach us how to love, how to care for animals. Understand? And another thing we'll learn also here, that is importance of communication. Communication बहुत जरूरी होता है, whether it's for human being or for animals. जैसे कि the Doctor Dolittle, he understands human also, and he understands the birds, the animals also. So that's why he becomes famous. So let us now start the story. So the story starts in this way, that Dr. Dolittle was sitting in his kitchen talking with the cat's foodman who had come to see him with a stomach ache. And then the cat's foodman asked him, why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? So this was the suggestion that was given by cat's foodman. तो ये suggestion पहले दिया जाता है cat's foodman के द्वारा. cat's foodman एक character है जो कैट को फूड देता है, समझ लो. ओके, देन देयर इज अ पैरट हुज नेम इज पॉलिनेशिया. सो पॉलिनेशिया वाज सिटिंग इन द विंडो, एंड देन the Polynesia will also say something. But before that, the cat's footman again told, you see doctor, you know all about animals much more than what these vets here do. तो बाकी डॉक्टर से आप और भी ज्यादा जानते हो. That book you wrote about cats, कैट के बारे में ये एक बुक भी लिखा है. आई कांट रीड और राइट माई सेल्फ, माई वाइफ थेरोसिया इज ए स्कॉलर एंड शी रीड योर बुक टू मी, यू माइट हैव बीन अ कैट योरसेल्फ. तो उसको मजा करके बोलता है, आप शायद पिछला जन्म में एक कैट हुआ करते थे. यू नो द वे दे थिंक. सो दैट मीन्स वन थिंग वी अंडरस्टैंड हियर, that is understanding. So one quality that we find in Dr. Dolittle, that he understands. So that means we can write here, he is very understanding. Okay, he's understanding about the animals. Then when the cat's foodman had gone for parrot, flew off the window onto the doctor's table and said, that man has got sense. ये तो सही सही बोल के क्या है, कैसा, that's what you got to do, ये तो आपको करना चाहिए, be an animal doctor. ये सजेशन है जो डॉक्टर डोलिटल को दिया जाता है पॉलिनेशिया के द्वारा और कैट्स फूडमैन के द्वारा भी. Give the silly people off if they have not brains enough to see you are the best doctor in the world. So take care of animals instead and they will soon find it out. Be an animal doctor. तो बार बार ये लाइन रिपीट होता है कि be an animal doctor, be an animal doctor. After that we find, oh, there are plenty of animals doctors. John Dolittle बताता है कि और भी तो animal doctor है, मैं क्यों famous हो जाऊंगा. But Polynesia said, yes, there are plenty, but one quality is missing in them. And what is the quality? None of them are any good at all. Why? Because they do not understand. So one quality, and another is the theme of this story also, understanding and love and compassion that you find in Dr. Dolittle, जो कि बाकी जो डॉक्टर्स है उनमें मिसिंग है ये क्वालिटी. Now listen, doctor, I'll tell you something. Did you know that animals can talk? I knew that parrots can talk, said the doctor. Then the bird again said, oh, we parrots can talk in two languages, people's language or bird language. तो people's language तो लोग समझ जाते हैं, but birds language तो लोग नहीं समझते हैं. If I say Polly wants a cracker, you understand me. But hear this, kaka, oi, oi, fi, fi. So this is the bird language, जो कि एक इमेजिनेटिव स्टोरी है बेसिकली ये. तो ये इमेजिनेटिवली लिखा गया है. एक्चुअली ये बर्ड्स लैंग्वेज नहीं भी हो सकता है, बट इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन ये है दैट एनिमल्स हैव आल्सो देयर ओन लैंग्वेज. एनिमल्स का खुद का लैंग्वेज है, जैसा ह्यूमन बीइंग का अलग अलग लैंग्वेज है, अलग देश का अलग लैंग्वेज है, अलग जाति का अलग लैंग्वेज है. सो एनिमल्स हैव देयर ओन लैंग्वेज एंड एज ह्यूमन बीइंग्स वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. और यही क्वालिटी सब में नहीं होता है, that they miss out the quality. But here we find that in Dr. Dolittle we find this quality. Good gracious, what does that mean? That means is the porridge hot yet in birds language. Okay, तो डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि बर्ड लैंग्वेज भी अलग होता है, राइट. देन पोलिनेशिया फिर बता दिए कि what would have been the good, you would not have understood me if I had. डॉक्टर बताता है कि चलो और बताओ और भी मुझे सीखना है. देन पॉलिनेशिया धीरे धीरे बताने लगती है इसको और ये सीख जाता है धीरे धीरे. टेल मी सम मोर, ऑल एक्साइटेड एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रॉयर एंड केम बैक विद अ बुक एंड अ पेंसिल. नाउ डोंट गो टू फास्ट एंड आई विल राइट इट डाउन. कि मैं लिख लेता हूँ. कौन लिखता है ये? डॉक्टर डोलिटल लिख लेता है. दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक गिव मी द बर्ड्स एबीसी. तो बर्ड्स एबीसी क्या है? बर्ड्स एबीसी है द लैंग्वेज दैट द बर्ड्स स्पीक. बर्ड्स एबीसी. तो ह्यूमन एबीसी, ह्यूमन जो लैंग्वेज में बात करता है. ओके, then so that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. तो ये क्वेश्चन बन सकता है
कि हाउ द डॉक्टर लर्न bird's language. So through Polynesia. Polynesia was the bird who helped Dr. Dolittle. Okay. And then at the time when the dog Jeep came in, the parrot said to the doctor, see, he's talking to you. तो डॉक्टर अब धीरे धीरे समझने लगता है, looks to me as though he was scratching his ear, but animals do not always speak with their mouths, said the parrot. तो एक हो जाता है verbal communication. Now another thing we find here is non-verbal communication, एकदम same to same human being की तरह है. Why? Because ह्यूमन बीइंग का भी जैसे लव कंपैशन है, उनके अंदर भी क्वालिटी है, उनके अंदर भी इमोशन है. सो एनिमल्स हैव द इमोशन आल्सो, और यही स्टोरी का मेन पॉइंट है. बट एनिमल्स डू नॉट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स. They talk with their ears, with their feet, with their tails. So we also communicate with our hands, with our feet, with our face, with the facial expressions. So similarly, it happens for the animals also. So धीरे धीरे डॉक्टर डोलिटल को ये समझ में आ जाता है कि एनिमल और बर्ड का भी अलग लैंग्वेज होता है. अंडरस्टैंड? सो व्हाट डज दैट मीन? आस्क्स द डॉक्टर. दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग. तो कुछ ऐसा एनिमल लैंग्वेज से वो बताते हैं कि जो डॉक्टर को बाद में समझ में आ जाता है. देन पॉलिनेशिया आंसर्ड. ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन. डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग and a very funny thing also. After a while, with the parrots help, the doctor got to learn the language of the animals so well that he could talk to them himself and understand everything they said. So ये एक revolution हो जाता है कि डॉक्टर डोलिटिल एकदम पूरा समझ जाता है और एनिमल लैंग्वेज को सीख लेता है completely. Understand? Then he gave up being a people's doctor altogether. Second part में हम देखेंगे कि how he becomes a famous animals doctor. Okay. So what are the qualities that we find here? What are the qualities that we find here in the first part? First part is that Dr. Dolittle एक understanding doctor है. Okay, he has love and compassion for animals. And another thing, जब ये bird का language Polynesia बताती है और सिखाने लगती है इसको, so then curiosity, that is another important quality that you find in the doctor, that the doctor becomes curious also to learn it. Okay. Then the second part. Now in the second part, as soon as the cat's food man had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, ये सबको बता देता है, तो old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake. और ये बहुत कॉमन सिचुएशन है, अपना डॉग्स को, अपना बिल्ली को सब लाता है धीरे धीरे. एंड फार्मर्स केम मैनी माइल्स टू शो हिम सिक काउज एंड शिप. तो सिमिलर कंडीशन है जैसा कि ह्यूमन बीइंग के साथ होता है, सिमिलर कंडीशन है एनिमल के साथ भी होता है. डिजीजेस एंड इलनेसेस, एंड दे मेक ए लाइन. देन वन डे अ प्लाव हॉर्स वाज ब्रॉट टू हिम. और ये प्लाव हॉर्स का सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें कुछ लर्निंग भी मिल जाएगा. ओके. You know, doctor, देखो हॉर्स बताने लगता है. You know, doctor, that vet over the hill knows nothing at all. He has been treating me 6 weeks now for something or the other. तो 6 हफ्ता इनको ऑलरेडी ट्रीटमेंट मिल गया है दूसरा डॉक्टर से. What I need is spectacles. I am going blind in one eye. There is no reason why horses should not wear glasses. तो बहुत फनी सिचुएशन है. इस हॉर्स को लगता है कि इसको ग्लास पहनना चाहिए. ओके. जैसा बाकी लोग पहनते हैं. बट द स्टूपिड मैन ओवर द हिल. स्टूपिड मैन कौन है? डॉक्टर को बताता है. डॉक्टर डोलिटल नहीं, दूसरा डॉक्टर जो कि हिल के ऊपर अपना डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है. दैट डॉक्टर. द स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माय आईज. वो कभी मेरा आंख की तरफ देखा ही नहीं. सो व्हाट इज मिसिंग हियर इन दिस डॉक्टर? दैट मीन्स ही डज नॉट अंडरस्टैंड द एनिमल्स लैंग्वेज. तो अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी जो है ये मिसिंग है. ओके. सो हियर आई राइट द मिसिंग क्वालिटी इज दैट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग. तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है ये. ओके. तो इसको हम लिख देंगे, फिर काट देंगे. दैट मीन्स इज नॉट अंडरस्टैंडिंग. एंड देन ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स. बड़ा बड़ा दवाई देने गया है वो. आई ट्राइड टू टेल हिम बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज. व्हाट आई नीड इज स्पेक्टेकल्स. एंड अनदर थिंग इज कि ये हॉर्स एक चीज बताना चाहता है वो डॉक्टर को, और डॉक्टर समझ नहीं पाता है. सो व्हाट इज देयर? और एक थीम हमें मिल जाता है, गैप इन कम्युनिकेशन. ओके. कम्युनिकेशन गैप भी बोला जा सकता है, और गैप इन कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन जब तक सही सही नहीं हो जाता है तब तक ये ट्रीटमेंट भी सही नहीं होगा. सेम थिंग फॉर स्टडी ऑल्सो. जैसा ह्यूमन बीइंग अगर कुछ बताता है और अगर गैप इन कम्युनिकेशन रह गया तो बात सही सही नहीं पहुंच पाएगा.
Of course, said the doctor, I'll get you some at once. Then I would like a pair like yours. Because ये कैसे संभव हो रहा है? This is becoming possible because Dr. Dolittle has learned the animal's language now. Understand? And then the horse said that I would like a pair like yours. ऐसा spectacle चाहिए जैसा Dr. Dolittle पहनता था. Okay. Only green. They'll keep the sun out of my eyes while I'm plowing the field. देखो कितना ये sensitive है अपना eyes के बारे में. Okay. Human being भी इतना sensitive नहीं है. Certainly, said the doctor. Green one you will have. So अब धीरे धीरे एक customer satisfaction के ऊपर जोर दे रहा है because he is understanding the animal's language and what is mattering here is customer satisfaction. तो एक ये जो horse है ये तो customer है Dr. Dolittle के लिए and the customer is getting satisfied. Okay, understand? Then, you know, the trouble is that, said the plow horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animals. सबको लगता है कि वो एनिमल डॉक्टर बन सकता है, बट नहीं. एनिमल डॉक्टर बनने के लिए क्या जरूरी होता है? जरूरी होता है विट, अंडरस्टैंडिंग, लव एंड कंपैशन फॉर एनिमल्स एंड कम्युनिकेशन. और उनका भाषा जो है तो हो सकता है वर्बल, नॉन वर्बल, वो समझना बहुत जरूरी है. ओके, बट so the doctor said, well, when will my glasses be ready? अब हॉर्स से पूछने लगता है, I'll have them for your next week coming again Tuesday. Good morning. तो ये बोल के वो चला जाता है. Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles and the plow horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. जैसे कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, इसको लगा दिया गया है स्पेक्टैकल्स और ये अभी देख पा रहा है. अंडरस्टैंड? सो दिस इज वेरी फनी सिचुएशन एंड ऑल्सो फनी सिचुएशन एंड ऑल्सो वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. एक थॉटफुल सिचुएशन भी है. तो थॉटफुल सिचुएशन क्यों है? व्हाई इट्स थॉटफुल? बिकॉज क्वेश्चन यहां से बन जाएगा दैट हॉर्स का जो ये जो ट्रीटमेंट हुआ ना, सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर? सो वी लर्न दैट डॉक्टर डोलिटिल वाज अ वेरी गुड पर्सन और अ गुड डॉक्टर. Why? Because he understood कि हॉर्स को क्या चाहिए था. That the horse needed spectacles. हॉर्स को spectacles चाहिए था और ये समझ गया था. Understand? This is the only quality that we need in human beings also. ये स्टोरी का मेन पॉइंट है ये. And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside. अब इस farm animals धीरे धीरे ये जो glasses लगा के glasses यूज शुरू कर दिया. ओके, राउंड pedal by and a blind horse was a thing unknown. और blind horse देख ही नहीं पाए लोग. Why? All thanks to Dr. Dolittle. And so it was all with other animals that were brought to him. As soon as they found out that he could talk their language, they told him what the pain was and how they felt. तो जब बाकी एनिमल्स के साथ भी ऐसा हुआ और डॉक्टर डोलिटिल अंडरस्टूड वेरी वेल कि प्रॉब्लम कहां पर है एंड सही सही दवाई वो दे सकता था. Why? Because he understood द लैंग्वेज. ओके, और लैंग्वेज भी समझना और साथ साथ एनिमल्स का जो इमोशन. अब देखो रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो एनिमल का लैंग्वेज समझना मुश्किल है. अंडरस्टैंड? अगर बर्ड का लैंग्वेज समझ नहीं जाओ, सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बट यू कैन अंडरस्टैंड द इमोशन बाय द जेस्चर्स, बाय द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट दे आर डूइंग. ये मेन पॉइंट है स्टोरी का. Now all these animals went back and told their brothers and friends कि एक डॉक्टर हमें मिल गया है जो कि अच्छा डॉक्टर है. Really was a doctor, and whenever any creatures got sick, not only horses and cows and dogs, but all the little things वो सब आने लगेगा. जैसे कि harvest mice आ गया, badgers आ गया, bats आ गया, all came at once to his house on the edge of the town, so that his big garden was nearly always crowded with animals. एकदम पूरा जो गार्डन है वो भर गया है एनिमल से. You can also see the picture here. So there were so many that came. He had to have special doors. अब जैसे कि होता है अगर ह्यूमन कल्चर में देखा जाए, जैसे कि एक होता है जनरल मेडिसिन डॉक्टर, उसके लिए अलग काउंटर हो जाता है, फिर उसके बाद ENT का अलग काउंटर हो जाता है. So similarly here you find that Dr. Dolittle also made different doors for different animals. ये क्यों जरूरी था? This was very important and very necessary because he understood, क्योंकि सबका स्पेशल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी था. So in our culture, actually human civilization, we find that medical treatment has got advanced. Okay, साथ साथ एनिमल ट्रीटमेंट भी अगर देखा जाए इसको भी तो होना चाहिए, एनिमल ट्रीटमेंट का एडवांसमेंट होना चाहिए. सो यार राइट, एनिमल ट्रीटमेंट का भी एडवांसमेंट होना चाहिए. और ये कैसे पॉसिबल है? this will become possible when human beings will understand animals language, okay, through love and compassion for the animals.
Then cows over the side door, sheep on the kitchen door, और अलग अलग ऐसे लिखा था. Okay, कि इस तरफ से cows जाएगा, इस तरफ से sheep जाएगा. So each kind of animal had a separate door, and even the mice had a teeny tunnel made for them into the cellar. Cellar means a room below ground levels, often used for storage. तो वो नीचे का दरवाजा था, जैसे कि टॉम एंड जेरी में दिखाया जाता है, जेरी नीचे से घुस जाता है. ओके, और एक छोटा सा होल होता है. So there's a teeny tunnel also through which the mice also could enter. Where they waited patiently in rows for doctor. अब देखो, they waited patiently in rows. This is very important. Then animals are also very patient. ये quality है जो हमें human being के अंदर भी मिल जाता है, और साथ साथ हमें ये मिलता है यहाँ पर animal being के अंदर भी. Okay. And so in a few years time, every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle. MD बन गया ये अब. And the birds who flew to other countries in the winter told the animals in foreign lands about Dolittle. जो समझ सकता था उनका बात, animals का बात, and helped them in their troubles. In this way, he became famous among the animals all over the world. और ये Dr. Dolittle famous बन गया. He was happy and liked his life very much. So this was the shift from human doctor to an animal doctor. Okay, और ये कैसे पॉसिबल हुआ? थ्रू वन, एक तो कैट्स फूडमैन. ओके, एक तो हो गया कैट्स फूडमैन, एंड अनदर इंस्पिरेशन वाज पॉलिनेशिया. अंडरस्टैंड? तो पॉलिनेशिया वाज अ बर्ड. दिस बर्ड एक्चुअली टॉट दिस डॉक्टर डूलिटिल द बर्ड्स लैंग्वेज, एनिमल्स लैंग्वेज सिखा दिया पूरा पूरा, बर्ड्स एबीसी. एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर डूलिटिल बन गया एक अच्छा खासा फेमस डॉक्टर. सो व्हाट वी लर्न हियर इन दिस स्टोरी, अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि थीम्स हमें क्या क्या मिल जाता है. ओके, सो वन थीम वी फाइंड हियर आई राइट. चलो यहाँ पर लिख लेते हैं. सो वन थीम, so themes, one theme, the first theme is love and communication or love and compassion for animals. Love and compassion जो कि बहुत जरूरी होता है, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर रहना चाहिए, एनिमल्स के लिए भी. लव एंड कंपैशन फॉर ह्यूमन बीइंग्स. देन कम्युनिकेशन. ओके, कम्युनिकेशन इज वेरी रिक्वायर्ड. कम्युनिकेशन इज मच रिक्वायर्ड हियर. एंड अनदर थिंग इज नॉलेज बियॉन्ड बुक्स. जैसा बाकी जो डॉक्टर थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग बस अपना जो मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता था वही देख के बस ट्रीटमेंट करता था. बट दिस डॉक्टर डोलिटिल हैड द नॉलेज बियॉन्ड बुक्स बिकॉज he understood the emotion of the animals, and that's how he treated the animals. Okay, और यहाँ पर जो है और एक चीज हमें देखने के लिए मिल जाएगा, that is there is also symbolism in the story. How do we find symbolism here? कि animals being जो animals जो है ये कुछ symbolize करता है यहाँ पर. Okay, animals क्या symbolize करता है? Animals symbolize the voices. Understand? Animals symbolize the voices that are often ignored by humans. Okay, जैसे देखो यहाँ पर लिख लेते हैं symbolism में, when you find the green spectacles, जैसे कि हॉर्स ने मांगा था ना green spectacles, तो green spectacle was a requirement that was demanded by the horse. बाकी भेड्स जो थे, बाकी जो डॉक्टर्स थे, एनिमल डॉक्टर्स, they could not provide that. But green spectacles were provided by this Dr. Dolittle. That means we understand that symbolism ये बन जाता है कि the need of the animals. तो ये green spectacle symbolize करता है proper understanding को. Proper understanding. Okay. Proper understanding that should be present in the human being for all animals. Okay. And now at the very end, we have come almost at the end of the class. So here you find that some questions are there. Now, as I already told you, you'll find a link in the description box, which you can click and you can get the answers easily. Okay. And if you have any doubt or any query or any suggestion, you can write in the comment box. And if you are not a subscriber till now, you can, or you should subscribe our channel and share this video with your friends. Thank you so much.